Hello friends, welcome once again. In this video series, सवाल आपके जवाब हमारे, I will take one question from one of the candidates in one of the TAT videos, and if you have also similar questions, you can put it under this video, or you can directly WhatsApp me on the given number. The comment is from Sini Singal. He says, "Sir, you always took a negative theme story and it is easy to evaluate it, and a normal guy also tells that it is not good. Good one. Choose some good stories, then analyze and give your feedback." Now, ये आपकी बात सही है कि मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में जो responses लिए हैं वो unacceptable response का है. The purpose is to tell you that the entire process of the psychological test is based on a concept of stimulus response model. These are not academic tests जहाँ पे आपको questions मिलता है और उसके आप आंसर लिख सकते हो, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप रट्टा मार के भी लिख सकते हो. अनफॉर्चुनेटली जब मैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल पे अगर कोई सैम्पल एक्सेप्टेबल स्टोरी देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि कैंडिडेट उसी स्टोरी को रट के वो मेरे ही क्लास में जब आता है ट्रेनिंग के लिए तो वही मेरी कहानी मेरे को ही चिपका देता है. सो इट डज नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल जो है इट इज़ बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग मॉडल, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपको जो देता है, फॉर एग्जाम्पल दिस WAT TAT और व्हाटएवर दे आर कॉल्ड स्टिमुलस, और आप जो उसको लिख के देते हो दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स. और बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक करना है. तो मैं अनएक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज को लेके मुझे वो एक्सप्लेन करने में आसानी होती है कि दिस इज़ वेयर इनकन्सिस्टेंसी इज कमिंग और द डेल्टा इज कमिंग विच नीड्स टू बी फिक्स्ड, और उसे मैं अपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस के थ्रू उन चीज़ों को एड्रेस करता हूँ. सेल्फ SML के वीडियोस भी आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, अदरवाइज उसका जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. Now, if you look at this picture, you can see a picture presented by the psychologist goes inside you. There is an inner process जो दिखता नहीं है, लेकिन उस inner process को बाद में आप लिख के बाहर दे देते हो. तो what the psychologist sees is the response. What he presented was the stimulus, and in between you have the freedom of choice. तो इसे ठीक करना. So the emphasis is to work on the freedom of choice. That's an inner job. मैं SML में एक बात बोलता भी हूँ कि इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. लेकिन सनी का जो रिक्वायरमेंट है वो बोलता है कि सर मुझे रेस्पॉन्स एक अच्छा वाला लेके दो. ना सनी को जैसे मैंने बोला कि रेस्पॉन्स सही वाला देने से आप उसको रट्टा मार देते हैं. ऑलरेडी देयर इज टू मच ऑफ करप्शन दैट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ SSB कोचिंग. यूट्यूब इज़ फुल ऑफ दोज रेस्पॉन्सेज के ऊपर जो काम किया हुआ है. हाउएवर आई वांट टू टेल यू देयर आर ऑलरेडी 2 videos I have uploaded based on such requests where I have given the acceptable story, and one of them AFOSOP YouTube channel पे जाओगे and if you type how to write amazing TAT response you will find that. and उस वीडियो में मैंने इस पिक्चर के ऊपर एक response लिखा है जो कि आप उसको देख सकते हो, एंड उसमें बहुत डिटेल में बताया है इस पूरे SR मॉडल के प्रोसेस को, जिसकी शुरुआत होती है इस पिक्चर को 30 सेकेंड में सही तरीके से ऑब्जर्व करके अपने आँखों से इसको अपने ब्रेन में इनपुट करना. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ TAT स्टोरी राइटिंग इज़ नॉट टू राइट द स्टोरी बट टू ऑब्जर्व द पिक्चर एक्यूरेटली इन डिटेल. इसमें आपका रीजनिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स ये सब लगता है. द सेकेंड स्टेप इज़ इस पिक्चर को आपके अंदर जाने के बाद ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद accurate perception of the picture. Perception is इस पिक्चर से मीनिंग निकालना, और let's call it connecting the dot. That's called perception. The third step is association. Association मतलब इस पिक्चर को अंदर जाने के बाद किस तरह से जीवन के अनुभव, some directly experienced by you, some through your observation of life around you, उन एक्सपीरियंस के साथ इसको कैसे कनेक्ट करते हो. उस कनेक्शन के बाद निकलता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन. एंड यहाँ पे इमेजिनेशन भी है. क्योंकि अगर आपका वो एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं है तो यू इमेजिन, एंड देन हैविंग डिफाइंड द प्रॉब्लम यू हैव टू नाउ tell what will be the solution, which will be written in the form of
what is currently happening. And the last part is what is the final outcome, is the goal that you achieve. So if you see, there are distinctly three parts. First is observation and analysis and identification and defining the problem. Second is solving the problem, and final is to achieve the goal. So what led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. तो इस पिक्चर में ये जो मैंने दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में बहुत ही डिटेल में हर स्टेज को एक्सप्लेन किया है. सो आई विल सजेस्ट यू, सिंगल एंड ऑल अदर्स, to kindly go and watch it if you have not already seen it. अगर आपको देखने में अगर वो लिंक नहीं मिलता तो you can WhatsApp me on this number 9090099035 and I'll share you the details. It will give you a lot of clarity, and do post your comments after watching that video कि क्या समझ में आया, and do you find there is a difference in the way you are thinking and what is expected. इस डिफरेंस को आपको कम करना पड़ेगा so that you perform well. एंड उसी तरह से एक और AFOSOP का यूट्यूब वीडियो, उसका नाम है डेवलप द स्किल्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर दैट इज स्टिमुलस, क्या लिखा है, केयरफुली इन डिटेल है व्हाटएवर, है ना, ये वाला डेवलप द स्किल्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर. इसमें इसी पिक्चर के ऊपर दिया हुआ है, रेस्पॉन्स दिया हुआ है, और उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है. डू वॉच इट एंड सी कि आप जो कर रहे हो, starting from the observation, perception, association and the whole process of problem solving, और यहाँ पे जो बताया हुआ है, do you find there is a logical difference in the way you are handling it. अगर वो logical difference है, you'll have to see आपके approach में, या जो मैं बता रहा हूँ, which is more logical. Please take what is correct to your own logic and do it, and do post your comment on that also. So these two are there which are acceptable responses. इसके अलावा अगर आपको acceptable responses चाहिए, देन AFOSOP का जो ग्राफी चैनल है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, कर्नल गणेश बाबू 1111.ongraphy.com/s/store. इसमें जाओगे तो इट विल ओपन दिस पेज. जो थर्ड वीडियो है, फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट्स असेसमेंट, इसमें जाने से यू विल गेट 12 पिक्चर्स, एंड उसके ऊपर हर एक के ऊपर हाउ टू ऑब्जर्व देम एक्यूरेटली, what are the, how to perceive them, and sample responses. In most cases, 1 or 2 acceptable responses and at least 1 or 2 non-acceptable responses भी दिया हुआ है. So you are most welcome to go through that. And इसमें जो second वाला ये जो course है, self management leadership, this is about how to correct those deficiencies that you observe after having gone through these tests. So you can opt for them, self-management leadership and psych test assessment. If you have any problem, you can contact me on the given number. And उस ग्राफी चैनल के ऊपर these are the 12 pictures including the last one blank, जिसके ऊपर की बहुत डिटेल में how to observe, how to perceive, how to associate, इनके बारे में बात किया हुआ है, along with the sample responses, at least 1 in all cases and in some cases 2. And also unacceptable responses. So I will suggest you to go there and watch it so that you get clarity. And I'll only request you कि the brain का tendency ये हो जाता है कि एक बार sample responses देखने से हमारा brain फिर काम करना बंद हो जाता है, हम उसको रट्टा मार लेते हैं. So be careful. It's this I've always been telling it, लेकिन ये आप लोगों का requirement है तो I made it available. And इसके अलावा those who wish to go through the analysis of your own responses line by line, that is also available through online psychological test assessment, which will be conducted over 5 to 6 days of one-on-one interaction. आपके हर response को discuss किया जाएगा, and will be correlated with what you have claimed in your SD and how your WAT and SRT responses are coming, and are they in congruence with your TAT responses. After all, TAT is the basic test and the assessment weightage is 70%. So online psychological test assessment is available, जिसका details मैं आगे आपको share करूँगा, including the offline batches का details. So you're most welcome to contact me for that. Okay, the next 2 weeks AFOSOP offline composite batch consisting of both the self-management leadership classes and the SSB will be conducted from 19th February to 2nd March 2024. The date of reporting for this batch will be on 18th February, which is a Sunday, and the date of departure will be on 2nd March in the evening or 3rd March early morning.
The classes will be conducted at AFOSOP Sahas the camp. It will be a fully residential batch where the candidate as well as the assessors will be staying there in the campus, and there will be prolonged interaction that will be tremendously beneficial in terms of clarity. And in order to register, you can contact at 9090099035. इसके अलावा 1 week offline only GTO batches will also be conducted, and the next batch will be conducted from 26th February, and the next batch will be conducted from 26th February to 2nd March 2024. The date of reporting for this will be 25th February 2024, and the departure date will be 2nd March evening or 3rd March early morning. The classes again will be conducted at AFOSOP Sahas the camp Nagpur mein, residential batch. And the topics that will be covered under this is the stage 1 testing will be covered and practices will also happen. Then complete GTO testing will be covered, which will include the structure analysis, which is the USP of AFOSOP. And since on-ground tasks are available, so you will have the luxury of doing both the structure analysis and its application right on the ground. इसके अलावा one full psychological test also will be conducted. However, the assessment will not be carried out because it is predominantly a GTO batch. So that will be covered, and in order to register, you can contact at 9090099035. And इसके अलावा AFOSOP online classes are also available, in which full psychological test assessment and personal interviews available. In the full psychological test assessment, each of the 12 TAT responses will be analyzed line by line in a one-on-one format, and they will be correlated with your WAT, SRT and SD performance, and will check for consistency or congruence. And in-depth feedback will be given on each of the responses. Similarly, in the personal interview, you will be put through some pre-recorded videos as part of your preparation for the personal interview, and on the day of interview, a full-fledged interview will be conducted on each of the CIQ, and a detailed feedback will be given to you so that you exactly know how much is delta and where to work. So the date you can choose as per your convenience. So there is no fixed dates. You can choose as per your convenience and availability, and it will be conducted. 500% clarity is assured. And to register, you can use again the same number 9090099035. Kindly share this information with your friends. In case you are not already subscribed to the AFOSOP YouTube channel, request you to kindly subscribe it. Do post your comment on each of these videos and do share it with your friends. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.